Dear students, very good afternoon, all of you. Today we will start a new chapter, magnetic effect of electric current. New chapter, magnetic effect of electric current. Effect, magnetic effect due to electric current. New chapter, magnetic effect of electric current. Generally, we know a small magnet attracts small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. आमे साधारणतः जानिते पिला माने जदि गोटे छोट चुंबक नबा स्मॉल मैग्नेट से अट्रैक्ट करिवो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल एटसेट्रा। जदि गोटे बड़ मैग्नेट नबा ताले ताठो टिक बड़ बड़ मैग्नेटिक मटेरियल से ताडू टाणी परिवो ड्यू टू रेस्पोंसिबिलिटी फैक्टर दैट इज magnetic field, that is generally a small magnet attracts small piece of iron, cobalt, nickel, etc. These are magnetic materials. Attracted by magnet due to magnetic field, that is define magnetic field, define magnetic effect. First one, define magnetic field. In first chapter, in case of electrostatic, we define electric field. Here, magnetic field. The space around a magnet within which its influence can be experienced is called or is known as magnetic field. Again, just repeat it. The space around a magnet within which its influence can be experienced is known as or is called magnetic field. Please write the space around a magnet within which its influence can be experienced is called magnetic field. The space around a magnet within which its influence means prabhava.
suppose this is a magnet, suppose this is a bar magnet, north pole, south pole. Let us consider this is a space around the magnet, this is the space around a magnet within which maybe iron material, maybe cobalt material, maybe nickel material attracted by the magnet. Then we can say that this space around this magnet known as magnetic field, known as magnetic field, चुंबकीय क्षेत्र. The space around a magnet within which its influence can be experienced is called magnetic field. Next, electric field symbol is E. Similarly for magnetic field, symbolic representation, symbolic representation. Electric field like this, magnetic field like this. Okay, dear students, this part clear? Are you clear this part? Okay, next topic, magnetic effect of electric current. This is experimentally studied by Oersted scientist, named scientist Oersted. This scientist name Oersted. He experimentally studied in a current carrying conductor. He experimentally studied, first all of you please understand, in any conductor, जे कौन छोटे कंडक्टर भितर जो करेन्ट कंडक्शन हुए एक्सपेरिमेंटली स्टडी कले तार चारि पाखरे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुए, प्रोड्यूस हुए, क्रिएट हुए. He experimentally studied that. He experimentally studied that when current is flowing, when current is flowing through a conductor, magnetic field is developed around this current carrying conductor, around this current carrying conductor. से कौन सी गोटे करेन्ट कैरिंग कंडक्टर भितर जो इलेक्ट्रिक करेन्ट कंडक्शन हुए से एक्सपेरिमेंटल स्टडी कले चारि पाखरे गोटे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन हुए. एटा एक्सपेरिमेंटल स्टडी कले. हाउ देयर इज ए क्वेश्चन इन योर माइंड, एमिता गोटे क्वेश्चन आसी पारे जे केमिति से स्टडी कले, एक्सपेरिमेंटल केमिति स्टडी कले, हाउ केमिति जानिले जे मैग्नेटिक फील्ड चारि पाखरे प्रोड्यूस होछि से केमिति जानिले, स्टडी कले हाउ से केमिति जानले मैग्नेटिक फील्ड चारि पाखरे अछि बोली, डेवलप होइछि बोली. क्वेश्चन आछि माइंड रे, ये सर नो, ये सर नो.
Please start. Okay. Look at this carefully. Suppose this is a current carrying conductor. Look at this experiment carefully. Suppose this is a current carrying conductor. Suppose this is a current carrying conductor. Suppose this direction is north. This direction is south. This direction is obviously east. This is obviously west. North, south, east, west. Yes or no? ठीक है ना बोलो चाहिए. Direction mention. Suppose this is north, this is south, left part west, right part east. Let us consider in a current carrying conductor. A current carrying conductor is experimentally देखिले case 1 first case say Orested. Who is the scientist? Orested. से experimentally study कले जैसे देखिले गोटे straight wire नेले गोटे current carrying conductor नेले ता भीतर current conduction कले from south to north. This is the direction of electric current. This is the direction of flow of electric current. Current or direction. This is current carrying conductor. That is just a wire, straight wire. That is a straight wire. A wire भितर से जो current conduction कले, suppose the direction is from south to north. Then से कौन study कले? गोटे magnetic needle नेले. Magnetic needle. Magnetic needle. Magnetic needle. एवं से कौन कले केस 1 फर्स्ट केस ओरेस्टेटेड कौन कले ए मैग्नेटिक नीडल ऊपर वायर टाइप रखिले. दिस इज नीडल ता ऊपर रहला वायर कौन होला करंट कंडक्शन कोडू कोड केला डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ. कंडीशन मन नक फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. नीडल ता कोड रखिले वायर बिलो माने तळे ताने वायर रहला ऊपर वायर टा रहिला नीडल ऊपर. व्हाट विल हैपन कौन देखिले एक्सपेरिमेंटली से देखिले ए नीडल टा कौन होची deflected. This needle deflected towards west. ए needle टा इनती जो needle टा से west आड़ को deflect होउछ. से देखले needle लो ए पार्टा ए west आड़ को deflected होउछ ए आड़ को. जदि एटा आड़ को जीवो ए पार्टा आड़ को पळेछो. हमने एक्सपेरिमेंटल देखिले when एक्सपेरिमेंटली कौन देखिले देखो फर्स्ट केस रे when direction of current is from south to north. At this case needle deflects. Needle means magnetic needle. Magnetic needle deflected towards west. This is experimentally studied. Similarly, जदि current or direction reverse होइछंदा in your mind, question is that there is a question तो मन रखियो सरे current or direction यदि north through south आड़ को होइछंदा here ए जो स्टेट कंडक्टर नै छे current or direction कोड कोडे नै छे south एटी होछि north आरो मार्क देखो south to north. कोन एक्सपेरिमेंटल स्टडी कले magnetic needle
deflected towards west, west आड़ को पंखी गला, ए आड़ को पंखी गला, deflected ए आड़ को. Similarly, there is a question. Suppose current is flowing from north to south. Second case, when current flowing through, when current direction of current, when direction of current is from north to south, that is a reverse. South to north, reverse, north to south. Then magnetic needle deflected towards east. Magnetic needle deflected towards east. Case 1, case 2. First case, current south to north, deflection towards west. Current direction north to south, deflection towards east. Condition is where is above the needle. Needle ऊपर जदि wire टा थिवो, जदि wire टा needle तळे थिवो, what will happen? सब किसी रिवर्स हो जिवो. जदि wire टा एटे needle अछि, एटा needle, this is wire. ए दिटा के केस आसिला situation. Two situations are developed, two situations are created. Suppose similarly, if here magnetic needle here and wire is here, below, above, below, and if current direction is south to north, then magnetic needle deflected towards east, towards west, towards east, towards west. Okay, students, are you okay? समस्या बुझिल कि निडिल ऊपर वेयर रहिले कोन हो, निडिल तळे रहिले कोन हो, समस्या बुझिल ना बुझिल नाही. करंट रो डायरेक्शन कुआडे एबो से निडिल दा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होउछ बोली किम जानिमो, मैग्नेटिक फील्ड हेला बोली किम जानिमो ना. जेते बेले से एमिति थिला से डिफ्लेक्शन हो नथिला, त माने फील्ड नाही, फील्ड नथिला बोली से डिफ्लेक्शन हो नथिला. किंतु जेहेतु गोटे फील्ड डेभलप हैला तेणु से कौन हैला, डिफ्लेक्शन हवा स्टार्ट कला. डिफ्लेक्शन हेले जानिमो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होई. जदि तार डिफ्लेक्शन नाही त माने बुझा पड़िबो सेटे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हेई नाही, ऑकरिंग हेई नाही, क्रिएशन हेई नाही. तेणु जेहेतु तार डिफ्लेक्शन टा एठे कोडे होची टुवर्ड्स वेस्ट. सेकंड केस टुवर्ड्स ईस्ट, लाइक दिस. मने करो देयर इज ए क्वेश्चन, तो मनरे क्वेश्चन आसो तार भितर जे करंट कंडक्शन हबनी, स्ट्रेट कंडक्टर जो वायर टा अछि गोटे कंडक्टर अछि, ए कंडक्टर भितर यदि करंट कंडक्शन हबनी ताले मैग्नेटिक नीडल अवस्था कोन हबो, इट इज बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. जदि इथरे करंट कंडक्शन ता को हमें स्टॉप कर दवा, करंट कंडक्शन करूचे साउथ रु नॉर्थ, एठी सेकंड केस रे नॉर्थ टू साउथ. यदि करंट कंडक्शन तुमे स्टॉप करे दबो, ए मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्शन आइतो पिला माने डिफ्लेक्शन आइतो बैक टू द इनिशियल पोजीशन, तार इनिशियल पोजीशन को सडन बैक कर. बुझिला ना बुझि पाला नै, टेल मी. लिखि दवा से कंडीशन टा लिखो. केस 3, when flow of current
is stopped when flow of current is stopped through this current carrying conductor, through this current carrying conductor, conclusion, then the needle back to the original configuration, or original position. All of you writing and also understand, yes or no? Okay. Next one is deduce for finding how can know direction. How can you know direction? Deflection मुझे लिखी दूची towards west, towards east. तमें किम जानियो direction? क्वेश्चन माइंड रे आउथिबो. आपण किम जाउछदी? Towards west होची कि towards east होची आपण किम जानले? That is the law. मन रख for direction पई needle ता कुआडे deflected हो तो केमदी जानिमो? That is the law. Swimming rule. मन रख. Rule is से rule टा कोनती swimming rule. ट्रिक रे सम्यक भाव में कही दूसरी केबे मनरू भूलिबो नहीं ता कोनती स्विमिंग रूल. देखो केमती पिला माने गोटे पर्सन स्विम करछे एमती पानी रे. एटा गोटे लोक तार एटा मुंड हला केमिति पहरी पहरी जाउछ. एई पट्टा तार होची एटा तार गोटे हाथ होची एटा होची लेफ्ट हैंड. एटा लेफ्ट हैंड. एपटे तार गोटे हाथ होची राइट हैंड. लेफ्ट हैंड राइट हैंड. नेक्स्ट हला एपटे एमती दीटा गोड़ अछि अपन एपटे गोटे गोड़ एपटे गोटे गोड़ सिनि पहरी पहरी जाउची. ये सब नो स्विमिंग रूल टा देखो केमती आगु को जाउची पहरी पहरी. सपोज एटा मन रख नॉर्थ, एटा सपोज साउथ. डायरेक्शन देखो सपोज दिस इज नॉर्थ, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउथ. एमती पहरी की जाउची एडे जुआडे पहरी की जाउची मन मन भाबो जुआडे स्विंग करची दैट इज साउथ टू नॉर्थ. तेनो एटा मन करला करेंटर डायरेक्शन. एटा ला करेंटर डायरेक्शन. देखो प्रैक्टिकली स्विमिंग रूल जुआडे से पहरी पहरी एटा ला फॉरवर्ड आगु को जाउची फॉरवर्ड. तंता गोड़टा पछाड़े अछि मुंडटा आगु को जाउची. मुंडटा को डायरेक्शन जाउची नॉर्थ आड़ को जाउची. को थारु साउथ टू नॉर्थ. यू नो मने करला भाबिबो करेंटर डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तले प्ले लिखलो तार लेफ्ट हैंड ता कुआडे सिग्निफाई करची. लेफ्ट हैंड ता कुआडे अछि वी कैन से ता बाह हाथटा कुआडे अछि वेस्ट. एटा वेस्ट. एटा जेहेतु नॉर्थ एटा साउथ तार लेफ्ट हैंड अछि कुआडे एटा ला वेस्ट एटा ला ईस्ट. जेतेबेले करेंटर डायरेक्शन साउथ रु नॉर्थ हबो सेतेबेले नीडल ता कुआडे डिफ्लेक्ट करिवो ता बाह हाथटा जुआडे लेफ्ट हैंड जुआडे. मन रख वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट हला जेतेबेले उल्टी गला
स्विमिंग टा जतले रिवर्स होई जिवो जतेबेले साउथ आड़ को जीव नॉर्थ रु साउथ से कौन हम से अनुसार ये कौड़े आसो ए डायरेक्शन हम ना नहीं तार लेफ्ट हैंड एपड़ू आसो देखुन प्रैक्टिकली जिते एपड़ को मुंडा होपट आई तार कौन पुणी एमती होगा सब बाँ हाथ मन रख लेफ्ट हैंड जुआड़े रहा डिफ्लेक्ट ऑफ मैग्नेटिक नीडल बाँ हाथटा राइट हैंड किसी देखा दरकार नहीं देख लेफ्ट हैंड यहाँ हम तार बाँ हाथटा लेफ्ट हैंड एपटा हम रईट हैंड ताले यहाँ कौड़े आसो जिते करेन्ट डायरेक्शन तमें स्विमिंग कर नॉर्थ रु साउथ ता बाम हाथटा कौड़े रोचे एपड़ को माने कौड़े ईस्ट यहाँ कौड़े रही वेस्ट तेणु साउथ रु नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ रु साउथ ईस्ट केबे भूलिबो नहीं बुझीला ना बुझीला नहीं ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड another interesting example another that is another rule how would a rule madhya koi duchi direction pai another rule that is named as snow rule se rule ta konti snow rule eta kono केमती जान स्नो रूल SNOW स्नो रूल और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टेड नीडल नीडल डायरेक्शन केमती जान देख स्नो रूल मीन्स SN साउथ टू नॉर्थ SN साउथ टू नॉर्थ SN साउथ टू नॉर्थ O for over W for west remember current direction south to north over deflection west similarly north to south over east रूल टा मन रख এইটা জানলে এইটা জানিও সব রিভার্স হয়ে যাব সাউথ টু নর্থ যাহা নর্থ টু সাউথ হলে সেটা রিভার্স হয়ে যাব তুমি গোটে জানলে অন্যটা জানি পারিও রিভার্স তা উল্টাটা লজিক রে যেমনি ম্যাথ রে পড়িছিল ট্রু অর ফলস ফলস অর ট্রু आरे ओके ऑल ऑफ यू जल्दी टी को आगू जा नेक्स्ट नाउ स्टडी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट बायट-सावर्ट लॉ बायट-सावर्ट लॉ Bayat is a scientist, Savarт another scientist, combined. Particularly experimental law, underline. Experimental law. Experimental law. Experimental law. Bayat-Savarт law. For deduce expression Bayat-Savarт law, that is deduce expression for magnetic field when current is flowing through a conductor. कंडक्टर भितर जो करेन्ट कंडक्शन हुए जेकोसी गोटे करेन्ट कैरिंग कंडक्टर भितर जो करेन्ट कंडक्शन हुए ओरेस्टेटेड एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी कहीदेला से जेकोसी गोटे करेन्ट कैरिंग कंडक्टर भितर इलेक्ट्रिक करेन्ट कंडक्शन हेले चारि पाखरे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुए किंतु एमाने परवर्ती समय कंबाइन को आसिले मिसिले स्टडी कले एक्सपेरिमेंटल देखिले बायट and Savarт and gave a law that is experimental देखिले
and deduce expression for magnetic field. Magnetic field केमती काढिले देखो how experimental law deduce expression for magnetic field. प्रथम पिला मन देखो suppose this is a current carrying conductor. Suppose this is a current carrying conductor. Let us consider this is a current carrying conductor XY. मने करो XY is a current carrying conductor. ए current carrying conductor रे कौन हुए magnetic field चारि पाखरे क्रिएशन हबो तेनु हमर एमती गोटे current carrying conductor अछि ता चारि पाखरे magnetic field एमती कोन होछि डेवलप होछि जेतोले करंट कंडक्शन हबो गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर भितरे जेतोले ता चारि पाखरे गोटे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुए तेनु हमर कन्वीनियंट मेथड पई ए जो करंट कैरिंग कंडक्टर मन रो इनफाइनाइट अछि ता कोन करिवा गोटे स्मॉल एलिमेंटरी पोर्शन कर दियो स्मॉल पोर्शन स्मॉल पोर्शन स्मॉल पोर्शन स्मॉल पोर्शन स्मॉल पोर्शन तेनु ए स्मॉल पोर्शन कन्वीनियंट पई ता कोनती कोन पिला माने ए स्मॉल पोर्शन ता कोनती current element एंटायर टा कोनती current carrying conductor गोटे कंडक्टर गोटे जे कोनसी पोर्शन कन्वीनियंट प्रोसेस पई एठी मनकर मैग्नेटिक फील्ड ता केते हम जानिबा तले एई पोर्शन ता जे टेक अप करिवा को कोनती कोन लेखा जे केमती current element रिप्रेजेंटेशन हला current element current element representation केमती लिखा जाए like this current element it is a vector quantity direction देछि vector quantity why who can say dl current element dl ऊपर r मार्क current element जोटे dl एमती लिखा हियो त माने एटा current element vector quantity काहे की why because its direction is always along direction of current रो direction जुआडे से current element रो direction सेआडे suppose current रो direction आडे flow of current this is a conductor current रो direction this direction तो ए direction रे current element that is a vector तार direction में सेआडे तले माने experimentally backward law कोन कहला suppose this is a conductor this is a current carrying wire this is a current carrying conductor and dlb right statement dear students all of you please draw this diagram please draw this diagram all of you draw x y here xy is a current carrying conductor or current carrying wire this is the direction of electric current step by step बुझ
एक्स वाई होची गोटे करेंट कैरिंग कंडक्टर ए करेंट कैरिंग कंडक्टर आई रो डायरेक्शन याड अछि एटा होची मने कर मु अज्यूम कले एटा होची करंट एलिमेंट पी पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड काढे को चाहूची आ चारि पटे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होची ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर डीएल आ द्वारा ए पॉइंट रे जो मैग्नेटिक फील्ड केते डिड्यूस की करथिले बायट एंड साबात स्टेटमेंट लेखो प्लीज let us consider xy is a current carrying conductor. xy is a current carrying conductor having DLB its current element vector suppose we wish to determine magnetic field since this is DL magnetic field should be dB. Suppose we wish to determine magnetic field bracket dB at point P having a position vector this point is suppose O having a position vector R vector and theta is the angle in between and theta here from this figure the theta is the angle in between position vector and current element vector. This is DL, this is DL, this is R. This angle is suppose theta. All of you right? Please start. Now according to Bayes-Sabat law, magnetic field
experimentally magnetic field number 1 magnetic field will be number 1 directly proportional to flow of current. Magnetic field will be has been directly proportional to flow of current through the conductor भितर current conduction केते है I, that is dB is directly proportional to I, directly proportional to flow of current through the conductor, that is dB is directly proportional to I. Equation number 1 first. Second, magnetic field will be directly proportional to length of current element. Length means magnitude, because dl is a vector quantity, magnitude direction, this is magnitude dl, that is directly proportional to length of current element that is we can write in the similar way. We can write equation number 2. Third one is directly proportional to sine angle, in between current element vector and position vector, that is equation number 3. समझते लिख लो, स्टार्ट कर लो. यस और नो. experimentally dB directly proportional to I, dB directly proportional to dl, dB directly proportional to sin theta. Number 4, inversely proportional to square of distance of O to P, square of distance of
that is dB is inversely proportional to, like this, equation number 4, equation 1, equation 2, equation 3, equation 4. Now on combining, now on combining equation 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We can write dB is directly proportional to I dl sin theta by r square. Yes or no? Yes or no? It is an experimental law. But ଆଉ ସାବଟ experimentally study କରିଥିଲେ ଏଇ component ଉପରେ ସବୁ depend କରନ୍ତି ବୋଲି, ନହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି କାହିଁକି sin theta ହେଲା କାହିଁକି cos theta ହେଲାନି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, because this is experimentally ସେ study କରିଛନ୍ତି experimental law. ସେ experimental ଦେଖିଲେ ଯଦି I ବଢୁଛି magnetic field ବଢୁଛି, କେମିତି ସେ deflection ଯୋଉ ହଉଛି deflection rate ଟା ଅଧିକ ବଢୁଥିବ, I ବଢିଲେ dB ବଢିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। এই ଲେନ୍ଥଟା ଯେତିକି ନେଇଥିଲେ ଯଦି ଲେନ୍ଥଟା ଅଧିକ ହବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଧିକ ବଢୁଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି। ଆଙ୍ଗେଲଟା ଯେତିକି ଅଛି ଆଙ୍ଗେଲଟା ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଡିବିର ଭାଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁ ବଢୁଥିବ, ଏଇଟା ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଯେତେ ବଢେଇବେ ଏଟା କମୁଥିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ, ତେଣୁ ଇନଭର୍ସ ରିଲେସନ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିଟା କନକ୍ଲୁଜନ ସେମାନେ ପାଇଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି। One is dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to sin theta, dB is inversely proportional to r square. Combining कले कौन पाइले से माने Batt and Savart, dB is directly proportional to I dl sin theta by r square. That implies dB equals to equality conversion कले गोटे proportionality constant multiply हो, that is dB equals to K is a proportionality constant. Here K is a proportionality constant. dB equals to K I dl sin theta by r square, whole bracket. Here K is a proportionality constant. K is a proportionality constant which depends on nature of medium, this is current element, this is point P, calculate at point P magnetic field, this to this nature of medium, ए भीतर medium कौन अच्छी which depends on nature of medium and